Hello and welcome viewers, I'm Pia and you're watching NewsX. This is the biggest inside scoop story we are getting at this point of time. The Narendra Modi government is set to complete 2 years of its third term on the 9th of June, and we are being told from our sources that Prime Minister Narendra Modi is likely to undertake a reshuffle in his cabinet next month. Without further ado, let's go straight across to part A of this NewsX breaking news series. The first part is focused on a report card which sources tell us has been prepared by all ministers. Now, as per sources, Prime Minister Modi has commissioned a performance report card for all the union ministers within his Council of Ministers. 10 specific parameters have been established to review the ministers' performance. The Prime Minister also intends to share the performance records of the high-performing ministries with the rest of the cabinet colleagues. A list of these high-performing ministers has already been compiled, and some of these union ministers are likely to receive promotions, is what we're learning according to our sources. My colleague Sanjay Sharma is with us on the broadcast to share further details. Sanjay, major news according to sources. Prime Minister Modi has commissioned a performance report card for all the union ministers and their ministries. There are 10 specific parameters, and he's also shared this with the rest of his cabinet colleagues. What further details can you share with our viewers on this? What are you picking up? देखिए, मोदी सरकार 3.0 अपने तीसरे कार्यकाल के आधे फेज में पहुंच चुकी। 2 साल कंप्लीट करने जा रही है। 9 जून को मोदी सरकार के 3.0 के 2 साल पूरे हो जाएंगे, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 साल के कार्यकाल का पूरी तरह से रिवाइज करना चाहते हैं, पूरी तरह से समीक्षा करना चाहते हैं कि कौन कौन से मंत्री ने अच्छे काम किए, उस कामों को प्रोजेक्ट भी करेंगे, उनके कामों को हाईलाइट भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन मंत्रियों का कामकाज ठीक नहीं रहा, जिनके कामकाज से वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, उन मंत्रियों को रिप्लेस भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ अब जो तैयारी होगी रिशफल की, वो होगी ध्यान में रख करके 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड के चुनाव आने वाले हैं, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं। तो इनको ध्यान में रख करके अब अगला रिशफल भी होगा। साथ ही साथ 2029 में अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पूरा करने के बाद में अब तैयारी शुरू करेंगे 2029 की, 2027, जिसको कि सेमीफाइनल माना जाता है। उत्तर प्रदेश, जहां पर की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती है, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती। तो अब पूरा की पूरा ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने नए चेहरों पर होगा। इन स्टेटों को ध्यान में रख करके इनको फोकस करके नया फेरबदल किया जाएगा, मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। साथ ही साथ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चेहरे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के मुताबिक काम नहीं किया, जहां पर कि वो कामकाज में जो अपने परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कम पाए जाते हैं, उनको फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को हो सकता है पार्टी में भेज दिया जाए। नई टीम भी आने वाली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की इसी महीने के आखिरी सप्ताह में बताया जा रहा, 20 मई के बाद नई टीम का ऐलान हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ मंत्रियों को नई टीम में जगह दी जाए, कुछ मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाएगी, और हो सकता है 1 या 2 ऐसे मंत्री भी होंगे जिनको कि गवर्नर बना करके भेजा जा सकता है। तो ये अब पूरी की पूरी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बजे अपने पूरे यूनियन मिनिस्ट्री को बुलाइए, बैठक बुलाई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड का खुलासा करेंगे। 10 पॉइंट्स निर्धारित किए गए थे, जहां पर कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई है। कौन कौन से मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार काम कर पाए, 10 पॉइंट्स पर कौन कौन खरे उतर पाए, उनको ही जगह मिल पाएगी। और जो लोग इसमें जगह पाने में सक्षम नहीं है, जो परफॉर्मेंस नहीं ठीक कर पाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। Alright, बने रहिए हमारे संग. We're also being joined by Ms. Joyita Basu, editor of the Sunday Guardian. Ma'am, thank you so much for taking our time to speak to us. We're learning some inside scoop as far as
Prime Minister Modi's cabinet rejig is concerned. Of course, the third Modi government is nearing the completion of 2 years. Sources have now told us that there is a comprehensive 10-point report card for every single minister, heading every single ministry that is being prepared. There will be a comprehensive performance review. He will be sharing the records with his cabinet colleagues as well, and those who've performed in an exemplary manner are also likely to receive promotions. We've just heard what our colleague Sanjay Sharma has had to tell us. What are your expectations from this, your assessment from the methodology that the Prime Minister has adopted? Of course, the Prime Minister will go by, performance. And by the way, before this cabinet expansion happens in June, we are expecting Nitin Nabin's new team coming into place sometime on, I think, next week or week after that, the third week of May. That has been the buzz, and that we have been also writing about. So that team is coming into place, and or it just might happen, but the two of these expansions and reshuffling happened together, because some of the ministers may also be sent to the organization. Although I have to say that it is expected that Nitin Nabin's team is going to be younger. So let us see how it shapes out. But in terms of the, when you are asking me about, the criteria that the Prime Minister will be looking into, of course, performance is number one criterion. But at the same time, when it comes to the allies, unless the allies are suggesting a change in a particular phase, but I think the allies will be retaining their ministries. Because certain portfolios that the allies hold, they are not going to let go of that. Say, for example, civil aviation, that is with the Telugu Desam. So I don't see the Telugu Desam giving up this particular portfolio. So unless, of course, the Prime Minister is unhappy with the performance of the minister, and then he will have to directly talk to Chandrababu Naidu, and then they will have to decide who is going to get what. Similar is the case with the JDU. So, there is a little kind of more certainty when it comes to the allies, but when it comes to the BJP ministers, well, from whatever we know, many of them are very worried, because they are not certain whether their performance has been up to the mark. And even otherwise, inside the government there is, people know who are the people who have not performed well, who have performed well. Then, of course, there are people, say, for example, all from RSS support and all. So all these things are also there. Okay? Absolutely, ma'am. Requesting you to stay on with us. We're, of course, moving on to part B of this inside scoop that we've been tracking.